my dear students and friends, welcome back. Again, a new video for you. And here, we are going to learn how to use should in active and passive voice. Actually, I have been getting a demand from my students to make a video on that particular topic to use should in active and passive voice. So let's talk about that. शुरू करते हैं. तो should पहले हम समझ लेते हैं. We just try to understand how to use should in active voice. तो first use of should हम करते हैं. तो जैसा कि आप जानते हो, actually it's a model. Should is a model verb, and usually you know the general formula to use a model is subject plus model verb plus first form of verb plus object. ये एक जनरल फॉर्मूला है मॉडल्स को यूज करने के लिए एक्टिव वॉइस में. तो पहले हम इसी को कर लेते हैं. शुड का मतलब जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो किसी को सजेशन के लिए या किसी को कोई एडवाइस देते हैं हम या सजेस्ट करते हैं, तो उस टाइम हम करते हैं. जैसे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए या आपको रेगुलर इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो यू शुड सिंपल यूज कर लेंगे. यू शुड लर्न या प्रैक्टिस, यू शुड लर्न इंग्लिश रेगुलरली. ये हम इस तरीके से कर सकते हैं. तो ये दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ शुड. अभी हम सेकंड यूज जो शुड का करते हैं तो वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है, या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं उसको या क्वेश्चन भी कह सकते हैं. जैसे इफ यू सी समवन इज डूइंग समथिंग एंड यू थिंक he or she needs some help from you, that time you ask, क्या मैं आपकी मदद करूं? मीन अगर आप चाहो तो मैं करूं. मैं करना चाहता हूं कोई काम, तब परमिशन लेते तो मे आई या कैन आई का यूज करते. लेकिन आप देख रहे हो कि अगर वो चाहे तो आप उसकी मदद कर सकते हो. लाइक शुड आई हेल्प यू, शुड आई हेल्प यू मतलब क्या मैं तुम्हारी मदद करूं. लाइक क्या हम बाहर आपका इंतजार करें, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या हम बाहर आपका इंतजार करें. तो शुड बी वेट फॉर यू आउटसाइड, शुड बी वेट फॉर यू आउटसाइड. तो ये सेकंड यूज है. फर्स्ट यूज मैंने बता दिया, या सजेशन या रिक्वेस्ट, किसी को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस नॉट रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को आप चाहते हो कि आप उसकी मदद करो अगर वो चाहे तो. शुड आई हेल्प यू, शुड आई पे यू नाउ, क्या मैं अभी पे करूं, लाइक दैट. ठीक है. नेक्स्ट यूज ऑफ शुड एक कंडीशनल सेंटेंस में होता है, जो प्रेजेंट के कंडीशनल होते हैं. जैसे यदि तुम पोस्ट ऑफिस जाओ तो ये पत्र डाक में डाल देना, है ना. इफ यू सिंपल तो हम बनाते हैं, इफ यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर, बट यू कैन यूज शुड हियर. लाइक शुड यू go to post office, please post this letter. तो ये हम इस तरीके से बना सकते हैं.
शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंडीशनल में ऐसे ही बनता है। शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अगर आप मेरे या अगर आप अपने पिता से मिलें तो उनसे कहिए वो मुझसे मिल ले, है ना। अगर आप अपने पिता से मिलें, शुड यू मीट योर फादर, प्लीज आस्क हिम टू सी मी। इस तरीके से आप बन सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड, तो शुड का जो दूसरा यूज है वो कैसे करेंगे हम, तो उसमें देखिए हम लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो इसमें हम यूज कर लेते हैं जैसे कि कहीं ऐसा ना हो तो छाता ले लो, कहीं बारिश ना हो जाए, है ना। तो टेक एन अम्ब्रेला, लेस्ट, and it is always followed by take an umbrella lest it should rain। तो should से ही lest के साथ should ही आए, lest it should rain। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिव। तो पैसिव में कैसे करेंगे, तो यू शुड लर्न इंग्लिश रेगुलरली, आपको पढ़ना चाहिए। अब अगर हम पैसिव में बात करें पहले सेंटेंस की, तो जैसे अगर हम बोलें उसको हर कार्यक्रम की या हर इवेंट की या एवरी इवेंट की सूचना दी जानी चाहिए, तो ये पैसिव है। तो ही शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इवेंट्स। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो जो पैसिव का फॉर्मूला रहेगा उसमें जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये, लेकिन अगर यहाँ पे पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ही शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इवेंट्स। तो उसको सारे इवेंट्स की सूचना दी जानी चाहिए। या और अगर आप इसमें आगे जाएं तो कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसको नेगेटिव में अगर जैसे लें, जैसे बच्चों को स्कूल में पीटा नहीं जाना चाहिए या बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए स्कूल्स में, है ना। तो अगर हम इसको लें तो चिल्ड्रन should not be punished physically. Children should not be punished physically or mentally, whatever. The children should not be punished. Punished ही ले लेते हैं, ठीक है। The children should not be punished anywhere. कहीं पे भी उनको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। Children should not be punished anywhere, in school or at home or anywhere. The children should not be punished. तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा इसमें कंडीशनल सेंटेंस में तो आप पैसिव इसको बना नहीं सकते, ठीक है ना। या शुड आई हेल्प यू को भी नहीं कर सकते, लेस शुड को भी नहीं कर सकते। तो ये पैसिव को हम इसमें यूज कर लेंगे। तो इफ यू so now we are going to study would, and that is a very important model in English, and it has got several uses
and we must know how to use it in English to speak or to write good English. Okay, so the first use of what we are going to talk, actually, as you studied earlier, used to, right? Okay, sir. Did you learn it? Did you remember Yes, sir. used to? Yes, a past habit. Yes. So used to is replaced by would in English. This is the first use. Why and how? Actually, used to means when we were in the habit of doing something in the past for a long time. Okay. जैसे I used to play cricket in my childhood. Okay. But if we were in the habit of doing something in the past for time being, not for a long time, that time used to is replaced by would. Clear? Okay, sir. Used to means when we were in the habit of doing something in the past for a long time. Long time. Okay. But would we use for the past habit when we were in the habit of doing that activity for a short period. Now I give you an example here using used to and would. Like as I say, I used to play cricket in my childhood, right? So because Yes, my childhood was big, it was for a long time, then I have used to. I used to play cricket. But suppose there is another example, like I would go, now I am using would, not used to. I would go for a walk every morning when I was in Delhi for 1 week. Now you see this one. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. I would go for a walk every morning when I was in Delhi for 1 week. Means I went to Delhi in past and I was in the habit of doing something, but that was for a short period, not for a long period. That time I cannot say I used to go for a walk every morning when I was in Delhi for a week. Is it clear? Yes, sir. So this is the first use of would. And the second use of would is to make a request. To make a request. Second use of would is Request. to make a request. Like, would you please? Would you please lend me rupees 2000 for a month? Would you please lend me rupees 2000 for a month? This is a request. Right? Would you sit here, please? Would you sit here, please? This is second example of request. Would you sit here, please? Understand? Is it clear? Yes, sir. Now third, use a very polite request. Third use is a very polite request. How we use it, I tell you. Okay, sir.
Here we use would you mind. Have you ever heard that request? Yes, sir. Request. Polite request. Have you ever heard that? Would you mind? I tell you like that. Would you? We always use mind here. Would you mind plus V4. Would you mind opening the door, please? This is a very polite. Would you mind opening the door, please? ये इतना पोलाइट रिक्वेस्ट है कि इससे पोलाइट रिक्वेस्ट इंग्लिश में होता नहीं है. Would you mind? Suppose you are having dinner or lunch with your relatives, friends, and you all are sitting around that table, dining table, and everybody is eating, you are eating too, and you need some salt, suppose, and you want to pick it up, but you see that that salt, that container, or what is it is called, container of salt is far away from you. You cannot pick it up from your seat. Then how would you ask someone to pass it to you? It's very polite. तब आप वहां पे बोलोगे would you mind passing me the salt, please? Would you mind passing me the salt, please? Understand? Okay, sir. Sir, could you hold for some time? Okay. So like, would you mind? Okay. Would you mind passing me the salt, please? मतलब आपको नमक चाहिए, दूर रखा आपसे, तो आप कैसे मांगेंगे? Would you mind passing me the salt, please? क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर देंगे? Would you mind passing salt, please? हाँ, तो would you mind प्लस ing वाला फॉर्म यूज करते हैं इसमें. Okay. So this is very polite request. To make a request, and used to is replaced by a word when you were in the habit of doing something in the past for a short period. So these are the use of would, and next use I am going to tell you. Okay. Next use of would is like we say would you like यूज करते हैं कि मीन्स जैसे आप क्या पसंद करेंगे या क्या आप पसंद करेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना would you like वाला यूज. like what would you like to have. तो एग्जाम्पल, आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? What would you like to have? आप क्या लेना पसंद करेंगे? A cup of coffee or a cup of tea? तो आपने कहा मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा. I would like to have a cup of coffee. ठीक है? I would like to have a cup of coffee. तो ये would like, जैसे कई बार हम now I would like to sleep. अब मैं सोना चाहूंगा. Please don't disturb me. I would like to go to bed. तो would like का यूज होता है. ठीक है? Next use. To make past conditional sentence. पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सॉरी, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जैसे तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस
Yes, हेलो। yes. हाँ, टू मेक पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, जैसे हमने कई बार बोला कि अगर मैं सपोज मैंने कहा अगर मैं दिल्ली जाता तो तुम्हारे लिए एक कैमरा लेकर आता। तो पास्ट में कंडीशन है, अगर जाता तो ले आता, मगर गया नहीं तो नहीं लाया। तो अगर जाता, अगर मैं दिल्ली जाता तो एक कैमरा लेकर आता। तो अगर जाता, दिस इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और सब्जेक्ट वुड हैव V3 से बनता है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में बनेगा ये प्लस सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। We follow that formula to make conditional sentence in past. Okay, sir. ठीक है, तो कैसे? Sentence. I tell you. If I had, तो past perfect में बन, if I had gone to Delhi, comma, I would have brought a camera for you. If I had gone to Delhi, I would have brought a camera for you. अगर जाता तो ले आता। We take some more examples here. अगर हम, जैसे मैंने बोला, अगर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते, अगर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, आप अगर हम उसे ले जाते है ना, तो इफ वी हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल, if we had taken him to the hospital quickly या promptly, promptly मतलब जल्दी से, तो उसकी जान बच जाती। तो he would have been, अब इसमें been चूंकि पैसिव में इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, वैसे जरूरत नहीं थी। he would have been, तो he would have saved नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसकी बच रही जान। तो ये पैसिव है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी पैसिव वॉइस मॉडल्स के। तो he would have been saved, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूज, फिफ्थ यूज ऑफ would. Would you like to learn more uses of would, or shall we stop here? Okay. What okay? Some uses. Okay. Yes. Okay. Sixth use. Sometimes we have conditional sentences which are not true or which cannot be true. कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो सच नहीं होते या हो नहीं सकते, पर फिर भी हम उनको बोलते हैं। वो कभी सच नहीं हो सकते, but they may be in any tense, whether they are in present, past or future. But if they cannot be true, we always used past indefinite and then subject and would plus V1 plus object. Then we use that formula for that. जो सच नहीं होते या हो सकते, वो किसी भी टेंस में हो, पर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट और वुड V1 से। जैसे अगर मैं बोलूं
कि अगर आसमान गिर जाए, अगर आसमान गिर जाए तो सब मर जाएंगे। तो कंडीशनल तो है, Yes, पर sir. ये सच नहीं हो सकता। Yes, sir. फिर भी हम बोल रहे हैं, तो क्या बनेगा पास्ट में? इफ स्काई, इफ द स्काई, इफ द स्काई फेल डाउन, तो पास्ट में ही बनेगा। भले फ्यूचर में लगता हो आपको, लेकिन चूंकि सच नहीं हो सकता तो बनेगा पास्ट में। इफ द स्काई फेल डाउन, all would die. If the sky fell down, all would die. तो सब मर जाएंगे। One more. जैसे अगर मेरे हाथ आसमान तक जाते तो क्या कर लेता? अगर मेरे आसमान तक जाते सितारे तोड़ लेते। हाँ, अगर मेरे हाथ आसमान तक जाते तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाता। इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस, बट सच नहीं होता ये। नहीं तो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के लिए तोड़ लाते, पूरा आकाश ही खत्म हो जाता, खाली हो जाता। Am I right? Yes, sir. So it should be in past. Yes. If my hands से बनाते, my hands reached, if my hand reached the sky, comma, I would bring stars for you. देखिए, if my hands reached the sky, I would bring stars for you. So that was the use of would, and it's very, very important in English. So you may go through it once again, and you may make sentences to practice it. Okay. Right? Yes, sir.